Can you hear my voice and can you see the screen and the screen is moving? Please tell me. Yes, sir, audible and visible. Yeah, okay. So we will talk about the behavior of cost. So whatever we'll discuss, पेपर पेन और कैलकुलेटर आप ले आइए और बिहेवियर हम बात करेंगे जस्ट टू रिकॉल योर मेमोरीज और थोड़ा सा फर्स्ट लेसन का बिकॉज टुडे इज आवर सेकंड लेसन। हम लोगों ने सिलेबस पे बात की थी, मैंने अभी तक शेयर नहीं किया। आई हैव नॉट शेयर्ड इट बट टुडे आई विल शेयर। We talked about the syllabus and then we discussed about the elements of cost and we studied the material cost, we studied the labor cost and overhead cost. Material, labor and overhead. And I explained to you that overhead cost is also called the factory overhead cost, FOH, or manufacturing overhead, MOH, or works overhead. In olden times, especially in India, there was Institute of Cost and Works Accountants of India. Material, labor, and overhead were discussed. Direct material, which is directly engaged with the production process. Indirect material, which is the part of the product but is not the main component of the product. I give you the examples. Thread in garments, nails, glue, polish in furniture. Then we discussed about the labor cost, direct and indirect. The labor which is directly engaged with the production process, the cost of the labor is called direct labor cost. And indirect labor, the labor which is in the factory but is not directly engaged with the production process. Indirect labor cost. Carpenters, tailors, direct labor. Indirect labors are supervisor, foreman, cleaner, sweeper, storekeeper, timekeeper. These are all indirect labor. Further, we discussed factory overhead. Indirect material and indirect labor is the part of the factory, and then all those expenses which are associated with the factory, but we can't
classify them into direct material or direct labor. Rent, maintenance, etc. And then we took the example of the calculation of production cost, and then we calculated the per unit cost, and then we discussed about the pricing strategy. And after discussion of pricing strategy, we discussed about the cost plus pricing markup, then units sold, sales. We calculated the cost of goods sold, then how to calculate the gross profit, then ending inventory and reconciliation. We discussed allocation of FOH. We studied that the allocation of FOH, there are 6 bases: material cost, labor cost, prime cost. Then we discussed about the labor hours, machine hours, and number of units. The practical application of these we will see in the chapter of standard costing and variance analysis. Then we calculated and we studied the income statement under absorption costing. Income statement under absorption costing. Kindly keep in your mind, when we prepare the cost statement in accordance with the elements of cost, it is called absorption costing for external reporting. In the calculation, there are 5 parts. First, the direct material, then the direct labor, factory overhead, work in process, and finished goods. And on some calculations we studied prime cost, material plus labor, conversion cost, labor plus FOH, per unit cost, cost of goods manufactured divided by units manufactured, markup, per unit cost multiplied by percentage of markup, sale price, per unit cost plus per unit markup, and the sale value, gross profit, and gross profit ratio we studied, gross profit per unit. And then we concluded our discussion on the difference between markup and margin. We talked about and I explained the difference between profit markup and profit margin.
So that was our previous discussion. Today is our second meeting, and our topic will be behavior of cost. Please keep in your mind, with reference to behavior, the cost is classified into three. Number one is fixed cost, the cost which remains constant, or the cost which does not vary in the decision making. It is called fixed cost. Rent of the premises is a fixed cost if it remains constant. Depreciation of equipment, maintenance if we have contract. The second one is variable cost. The cost which vary with the variation in the volume or output or production is called variable cost. Material cost is variable cost. Labor cost is also variable. One example I will give you about the material. You are in a garments manufacturing organization and you are manufacturing shirts. In order to manufacture one shirt, 2.5 meter cloth is required. 2.5 meter cloth. The price of cloth is, say, 10 per meter. So 2.5 into 10 will be 25. 25 will be the material cost for making one shirt. If you will make two shirts, it will be 50. Three shirts, it will be 75. Four shirts, 100. As the production will go up, variable cost will go up. If you will make 0 shirts, it will be 0. Now, the same is with labor cost. Let's suppose 2 hours are required to make one shirt, and you are paying to the labor worker 10 per hour. So labor cost for one shirt
will be 20, 2 will be 40, 3 will be 60, 4 will be 80, 5 will be 100. And if you'll make zero production, there will be zero labor cost. Or so this is variable. Now the factory is on rent, where you are doing this whole activity, the manufacturing activity you are performing, and you are paying the rent. Let's suppose the rent is 6,000 per year. Let's suppose you will make production or you will not make production. You have to incur the fixed cost. Mixed cost is that cost which has both elements, fixed as well as variable. Mixed cost is also called semi-fixed. Mixed cost is also called semi-variable. Now, the fundamental difference, is it clear to you? Are you with me? Yes, sir. Okay. The fundamental difference between fixed and variable is fixed cost always remain fixed in amount. Rent is your fixed cost. Like Legend Education Center, I will take the example to clarify the things. We are paying annual rent. We have to pay whether the students are coming or they are not coming. Students are taking physical classes or online. Evening classes all are on, and all of you are online. No one is here, but the rent of the premises we have to pay. Now, this rent is fixed cost. What will be variable? If we are providing hard copies of the material to the physical participants, it is variable cost. Study material. Another thing, lecture fee of the guest faculty is fixed cost.
Now, fixed in amount, variable cost vary in amount. Rent is 500 per month. Material and labor cost is 50 to make one shirt. If we will make one shirt, rent will be 500, two shirts, rent will be 500, three shirts, rent will be 500, four shirts, rent will be 500, but the material and labor cost, one shirt 50, two shirts 100, three shirts 150, four shirts 200. First difference between fixed and variable. The second difference is fixed cost vary per unit. How? 500 is the rent. If we will make one shirt, per unit fixed cost will be 500. If you will make two shirts, per unit fixed cost will be 250. If we will make three shirts, per unit fixed cost will be 166.67. If we will make four shirts, per unit fixed cost will be 125. And if we will make five shirts, per unit fixed cost will be 100 or 500 divided by 5. On the other hand, variable cost remains fixed per unit. 30 plus 20. 30 is the material cost, 20 is the labor cost. 50. So 50 per unit. If we'll make one shirt, 50 per unit. In amount it will vary, per unit remain fixed. One shirt 50, two shirt 100. Three shirt 150. But per unit, how much? 50, 50, 50. One shirt 50, 50 divided by 1. Two shirt 100, 200 divided by 2. Three shirts 150, 150 divided by 3. So per unit, it will remain fixed. Is it clear to you? Clear. Moving further. At zero production level, fixed cost remains the same. Fixed cost remains the same. I'm living in a rented flat and I'm going to Pakistan for 1 month vacation. I have to pay the rent of my premises. Whether I will use, I will not use because I have the contract. But I will not buy the fruits, I will not buy the vegetables, I will not buy the grocery because I will not be here. I will not put fuel in my car. Car will be in the parking.
Is it clear to you? At 0, fixed will remain same, variable will be 0. Now, one example, I have placed it. Example, how to differentiate, how to calculate. A comparative table, I have made it for you. Fixed cost is how much? 5,000. Variable cost is 100 per unit. We have made 100 units. 5,000 is the fixed cost. 100 into 100, 10,000 is the variable cost. 15 is the total cost, 15,000. 15,000 divided by 100. 150 is the per unit cost. %50 markup. So 75. And sale price is how much? 225. If we manufacture 200 units, then we will have fixed cost 5,000, variable 20, 25, per unit cost 125, profit markup 50%, आप हेलो करो, मैं आपको खास क्यों करता हूँ बोलो पूछो हाँ भेजना भेजना बन जाएगा If we see this table, in case of 100 units, our per unit cost is 150. And in case of 200 units, our per unit cost is reduced to 125. I will elaborate this example and we will see how in further combinations
this will affect. And then we will draw some conclusions and one mathematical equation which is also asked in the examination we'll discuss. If we have 50 units and we have 300 units, fixed cost 5,000, variable cost 50 multiplied by 100, $5,000. Total cost 10,000. Per unit cost 10,000 divided by 50, 200. Profit markup 50%, 200 multiplied by 50 divided by 100 is equal to 100. Sell price 300. Here, dear learners, is it clear to you the proceedings? समझ रहे हैं ना आप लोग भाईजान? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. 300 into 100 is equal to 30,000. 35 is the total. 35,000 divided by 300 is equal to 35,000 divided by 300. 117 approximately मैं लेता हूं. 117 multiplied by 50 divided by 100 is equal to 117 का, क्योंकि 50% is our markup policy, 58.5.
58.50 और हमारी सेल प्राइस 117 प्लस 58.50 175.50। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही है with the increase in production volume। अब एक अगर आप इसको और इंक्रीज कर दें, जरा टेस्ट कीजिए, देन आई विल गिव यू द कंक्लूजन ऑफ दैट। जस्ट कैलकुलेट इट। पेपर पेन एंड कैलकुलेटर इज विद यू भाईजान? Yes, sir. हाँ, जरा 500 पे कैलकुलेट कीजिए क्या कहानी बनती है। जस्ट कैलकुलेशन। पांच सौ यूनिट पे क्या स्टोरी बनेगी? पर यूनिट कॉस्ट सर 100 हो जाएगी। 100 हो जाएगी। ओके, ऐसा क्यों होता है? जरा अब आपको मैं ये स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इसका करके देता हूं। हम जब मार्केट में खरीदने जाते हैं कोई चीज, मैं आपको एक सिंपल से यूए की मिसाल देता हूं। एक पेप्सी की बोतल जो है, इसमें 355 मिलीलीटर लिक्विड होता है। वो ₹2.5 की मिलती है, 2.5 दिरहम की है। और जो 2.25 लीटर की 2.25 लीटर बोतल है, जिसे बिग बोतल कहते हैं पेप्सी की, जिसमें ऑलमोस्ट 7 बॉटल्स के बराबर, 7 पेप्सी केन्स के बराबर लिक्विड होता है, दैट इज अवेलेबल ओनली फॉर आई थिंक 8 दिरहम, 8 और 9। वो 17 या 18 की क्यों नहीं होती? उसकी वजह ये है, द रीजन बिहाइंड दैट इज दैट एज द प्रोडक्शन goes up, the per unit cost goes down। अब वो कैसे होती है? आप जरा देखिए। हमने 50 से मैं लेता हूं 5,000 फिक्स कॉस्ट, वी हैव, एंड 50 यूनिट्स। 5,000 फिक्स कॉस्ट, 50 यूनिट्स। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी हुई? 100।
Are you with me? Yes, yes. Second scenario, 5,000 fixed cost and 100 units. पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितनी हुई? 50, क्योंकि यूनिट बढ़ गए. द फिक्स कॉस्ट इज एब्जॉर्ब्ड बाय 100 यूनिट्स. जो कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. क्यों इसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहा जाता है? 5,000 यूनिट्स 200, यहां पे आगे क्या हुआ? 25, 5,000 यूनिट्स 300, 17. Are you with me? Yes, yes. जैसे जैसे as long as the volume will go up, the denominator of the fixed cost will become bigger and bigger. And the per unit fixed cost will become smaller and smaller. मुझे याद है जब हम आज से 40-45 साल पहले जब स्कूल में पढ़ता था, 1981, 82, 83, कॉरपोरेशन के स्कूल में तो मैथमेटिक्स उर्दू में पढ़ते थे. न्यूमरेटर को कहा जाता था शुमार कुनिंदा और डिनोमिनेटर को मखरिज. तो हियर डिनोमिनेटर वेरिएबल कॉस्ट, $5,000 divided by 50 is equal to 100. 10,000 divided by 100 is equal to 100. 20,000 divided by 200 is equal to 100. 30,000 divided by 300 is equal to 100. अगर आप अब पर यूनिट टोटल कॉस्ट ले लें तो क्या होगा? एनालिसिस आपके सामने रखता हूं. पर यूनिट फिक्स कॉस्ट प्लस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट. पर यूनिट फिक्स्ड प्लस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट. आर यू विद मी भाईजान? Yes, yes. Okay. Now 100 plus 100 is equal to 200.
50 plus 100 is equal to 150. 25 plus 100 is equal to 125. 17 plus 100 is equal to 117. The cost will decrease, or the per unit cost will go down till you will reach to the 100% capacity level. Once you reach to that, हम बात करेंगे, एक टॉपिक आएगा डिफरेंशियल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग. Once you will reach to that level, everything will be variable. In decision making. को एग्जाम्पल देता हूं. Legend Education Centers. I have a seating capacity of 20 chairs in a classroom. I'm hiring a lecturer to deliver the lecture, and I'm giving the books to the candidates who joins the program. And it is reality, real fact I'm telling to you, like IFRS or other material or stuff we provide. Now, 5 candidates, they join the class. Lecture fee will be same. 5 books I have to print out. 10 students join the class. Lecture fee will be same. 10 books I have to print out, or get the print of 10 books. 15 students join the class. Lecture fee will stay the same. 15 books I have to arrange from the photocopier. 20 students join the class. Now, when 20 students, it means my optimum capacity is achieved. Now, if 10 more students came, then I have to arrange one new lecturer. And I have to arrange new books. Is it clear to you? Yes, sir. ऐसा नहीं होगा कि आप प्रोडक्शन बढ़ाते रहें और आपकी यूनिट कॉस्ट नीचे आती रहे. अप टू द ऑप्टिमम कैपेसिटी ये काम चलेगा. Now, moving further, अब जरा देखिए, फिक्स कॉस्ट क्या थी? फिक्स्ड इन अमाउंट. वेरिएबल कॉस्ट वेरी इन अमाउंट. 50 यूनिट्स पर वेरिएबल कॉस्ट है हमारी.
5,000। ले ये लिखता हूं, 50 यूनिट्स पर हाउ मच इज 5,000। 100 यूनिट्स पर 10,000, 200 यूनिट्स पर 20,000, 300 यूनिट्स पर कितनी, ये देख लीजिए, 30,000। Is it clear to you? भजन, Clear, clear. Yes, sir. Clear. हाँ, पार्टिसिपेट कीजिए भजन। आपको डिसीजन मेकिंग में सवाल आएगा, डिफरेंशियल कॉस्ट एंड डिसीजन मेकिंग। Here 5,000 divided by 50, 100, 5,000 Divided by 300. divided by 300। एक कॉन्सेप्ट आएगा थ्योरी ऑफ कांस्टेंट, उसमें भी देखेंगे, लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस। 17 वेरी करेगी आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पर भजन, जैसे जैसे आपका वॉल्यूम ऊपर जाएगा। फिक्स कॉस्ट नीचे आएगी। लेकिन आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो रहेगी फिक्स्ड पर यूनिट। पचास यूनिट बनाए या 100 बनाए या 200 बनाए या 300 बनाए, 100 पर यूनिट। At zero production level, fixed cost will remain 5,000, but variable will be 0. 0। क्लियर है भाईजान? Yes, sir. आगे चलते हैं जरा। इस पूरे रिलेशनशिप को हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन, जिसके बारे में सवाल भी आता है, एक दफा पेपर में सवाल आया था, विद द हेल्प ऑफ ए मैथमेटिकल इक्वेशन
y is equal to a plus bx, एक इक्वेशन यूज होती है। स्टैटिस्टिक्स में एक मेथड है, वो कहलाता है लीस्ट स्क्वायर एंड रिग्रेशन एनालिसिस। y क्या है? y is equal to total cost, or you can say mixed cost. y a is equal to a is equal to fixed cost. Fixed cost in amount. B is equal to variable cost per unit. And X is equal to activity level or cost driver. अब जिस एग्जाम्पल से मैंने स्टार्ट किया था, the same example I will take it here, and then we will analyze it, and then after that हम जरा पोस्टमार्टम करेंगे मिक्स कॉस्ट का। आप लोग सब लोग फॉलो कर रहे हैं ना भाईजान? Yes, sir. Okay. So our equation here is y is equal to $5,000 plus 100x. How to use it? Cost, total cost, if 100 units are produced, Sir, we will put instead of X,
we have to write 100 instead of x. If 100 100, units produce. see, yes. 100 multiplied by 100. 100. So it will be 15,000. Yes, sir. Is it clear to you? Yes, sir. ये इक्वेशन आनी है इम्तिहान में भाईजान। ये पूरी जो कहानी सुनाकर आपको जो लेकर आया हूं मैं यहां तक का मेरा मकसद ये था। और उसके बाद एक चीज और हमने डिस्कस करनी है और फिर उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे अपना डिस्कशन को, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और फिर उसके बाद जो है और भी है कि अगर मिक्स कॉस्ट है हम उसमें से वेरिएबल और फिक्स को सेपरेट कैसे करना है। तो यहां तक हमारा आज का डिस्कशन होगा। सर अगर 100 यूनिट से कम होंगी तो फिर 100 मल्टीप्लाई बाय जैसे फॉर एग्जांपल 80 जी यूनिट्स बाजी, हैं तो ये फिर लीजिए, 100। जी। ये ले बाजी, करते हैं। 50 कर देता हूं। So 100 will multiply by with 50. कितना बना? 10,000। जो हमने किया ना ऊपर, ये वही है। Yes, sir. ये क्वेश्चन एग्जाम में एक दफा आया था। उसने कहा था कि फिट द इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब वो कैसे आया था वो भी मैं आपको बताता हूं। ये तो सीधा ये कहानी है सीधी। अब सर मैं इस कहानी को करता हूं उल्टा, जो कि इम्तिहान में आया था क्वेश्चन। उसको क्वेश्चन को आपको मैं बना कर देता हूं कि किस तरीके से दे हैव आस्क्ड। जब इंशाल्लाह हम, क्योंकि पहले 2 महीने हमारे जो हैं वो स्टडी के होंगे और आखिरी 2 महीने पेपर्स के होंगे इंशाल्लाह। अभी तो आज हमारी दूसरी मीटिंग है, तकरीबन 6-7 मीटिंग्स और होंगी स्टडी की। और फिर 6-7 जो हैं, क्योंकि टोटल 16 मीटिंग्स का हमारा ये कुरिकुलम है एज एन एवरेज।
तरह का क्वेश्चन आया जनाब एग्जाम में। जब एग्जाम आएगा तो आपको बताऊंगा। मैंने कहा जी कि ये टोटल या मिक्स कॉस्ट है। मैंने कहा जी एक तो आप ये बताइए कि हाउ मच इज द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इन द मिक्स कॉस्ट। पहला तो आंसर आप ये दें। एंड द सेकंड वन इज fit the equation y is equal to a plus bx। ये दोनों काम उन्होंने पूछे। और तीसरा काम उन्होंने पूछा कि द क्वांटिटी इज अदर देन दैट, जो कि टेबल में दी है। तो फिर क्या होगा? अब आज का जो हमारा डिस्कशन है, इसमें हम एक मेथड पढ़ेंगे। to differentiate between fixed and variable cost and that method is called high and low point method। high and low point method। What is that method? We will see। High and low point method बकायदा एग्जाम में पूछा गया था ये, and you must have an idea about it। क्या है? In high and low point method, we calculate per unit variable cost। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। कॉस्ट ऑफ हाईएस्ट एक्टिविटी
level minus cost of lowest activity level divided by highest activity level minus lowest activity level. अब इस क्वेश्चन को देखें तो cost of highest activity level, number of units is the activity level. It could be production, it could be volume, it could be hours, it could be mileage, it could be units, it could be liter, it could be meter, it could be dozens. इसे हम कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर. $60,000 minus $20,000. Divided by 5,000 minus 1,000. $40,000 Divide by 4,000. yes. Divided by 4,000 is equal to क्या होगा 10 per unit. Yes, sir. ठीक है जी. अब Yeah. सेकंड स्टेप पे ऑल ऑफ यू आर विद मी. आपको सबको समझ आ रही है भाईजान? हेलो. Yes, sir. नाउ fixed cost we want to calculate. Fixed cost. $20,000 minus
1000 multiply by 10, फिक्स कॉस्ट आपके पास आ जाएगी 10,000। आप चाहे दूसरे में फिट कीजिए, दूसरी एक्टिविटी में फिट कीजिए। 30,000 multiply by 2,000 into 10, 10,000। तीसरे में फिट कीजिए, 40,000 माइनस 3,000 into 10, 10,000। चौथे में फिट कीजिए, समझ आ रही है ना भाईजान आप लोगों को? हेलो? Yes, sir. Clear, clear. हाँ। सर ये जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट इक्वल टू टोटल मिक्स कॉस्ट माइनस, जी, ये हम क्यों कर रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रहा। ये क्यों कर रहे हैं हम? यस सर। देखें, sometimes we have a fixed cost and we have to differentiate between, we have mixed cost, fixed and variable for decision making। अब वो decision making क्या है? देखें, अभी आपको बताता हूं, ये आपको सिर्फ मैं प्रूफ दे रहा हूं। यस सर। जब ये किसी एक में आप फिट करें, मैं आपको सिर्फ ये फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस बता रहा हूं। अब वो कहते हैं कि व्हाट विल बी, अब इक्वेशन फिट करनी है, फिट द इक्वेशन। y is equal to a प्लस bx। क्या इक्वेशन होगी मुझे बताइए फिट करके? $10,000 मल्टी प्लस 10x। ये क्वेश्चन हो गई। ये इक्वेशन होगी। सवाल तो उसने दिया था ये, उन्हें एक रेंज दी, आपको दिखाऊंगा। सवाल सवाल में 3 की रेंज थी, 3 एक्टिविटीज थी। मैंने आपको जरा एलोबरेट कर दिया कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। उन्होंने कहा जी आप बताइए, इक्वेशन फिट कीजिए और व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट इफ 10,000 units are produced। अब ये एस्टिमेशन के, कॉस्ट एस्टिमेशन में ये यूज होगा। आपने जो सवाल किया था
कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? वाई? इज इट क्लियर टू यू? यस सर। जी। अब अगर 500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए जाएं तो क्या होगी कॉस्ट? हाई एंड लो पॉइंट मेथड, ये जो पूरी एक्टिविटी हमने की है, ये हमें एनालिसिस करने में मदद देता है। और कॉस्ट एस्टिमेशन, आपने अक्सर पढ़ा होगा कॉस्ट एस्टिमेशन, सुना है कभी? क्या सर, मिस हो गया मुझसे। कॉस्ट कॉस्ट एस्टिमेशन कॉस्ट एस्टिमेशन। वो यही चीज है भाईजान। फाइव हंड्रेड यूनिट्स, 15,000। ठीक है भाईजान, यस सर। समझ आ गई है क्या स्टोरी है? यस सर। तो आज हम अपना डिस्कशन यहीं पर कंक्लूड करेंगे और इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीक, जिसमें से सवाल भी आते हैं, कॉस्टिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। अब देखें, हमने ये ABC 1 2 3 एंड 4 में हाई एंड लो पॉइंट मेथड तक पहुंच गए हैं। हमारा जो सिलेबस है, यानी टोटल 17 पॉइंट का सिलेबस है, 2 मीटिंग में हमने तकरीबन 4 पॉइंट कवर कर लिए हैं। क्लियर जनाब? यस सर। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हो गया, बिहेवियर ऑफ कॉस्ट हो गया, हाई एंड लो पॉइंट हो गया, और मैंने आपको कैलकुलेशंस भी बता दी और इक्वेशंस भी फिट करके बता दी, और फिर इक्वेशन की मदद से कॉस्ट एस्टिमेशन भी कर दी। चलिए, प्लस क्यों किया है वो? A+B, ऊपर फिक्स कॉस्ट तो माइनस की थी ना हमने। ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। नहीं भाईजान, भाईजान देखिए, ए है फिक्स कॉस्ट और बी है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ना कैसे हुआ है टोटल कॉस्ट? जी, आप इसको टोटल कॉस्ट ले लें, आप इसको मिक्स कॉस्ट ले लें, दोनों चीजें हैं। ओके। ठीक है जनाब, और कोई क्वेश्चन? नो सर।
तो हम अपना डिस्कशन ये मैं आपको शेयर कर दूंगा और आपने इसको स्टडी करना है. We will conclude our discussion here. तो कल इंशाल्लाह हमारी मुलाकात, जो लोग मेरे साथ एएफएम में हैं, कल मुलाकात होगी. और आई थिंक आप लोग सब लोग ही हैं एएफएम में, मेरा ख्याल है. नहीं सर, मैं नहीं हूँ एएफएम में, मैं नहीं हूँ. आप कौन हैं? मैं अब्दुल रहमान सर. हाँ, आप नहीं हैं, बाकी लोग तो हैं. मैं तो आपको भी कह रहा था कि सारे पेपर खींच जाते. चलें. आई थिंक सर थैंक मेरा एएफएम एग्जाम्प्ट है. अच्छा, चलें ठीक है. इसका मतलब है सिर्फ एक ही दिन की मुलाकात है. यस सर. चलें, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू ओके वेरी सर, अल्लाह हाफिज. अल्लाह.